The third generation mobile technology, the third generation communication system was introduced in the 2000. 2000 मसीहारे 3G हमर इंट्रोड्यूस होला तो इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन 2000 और आको कुआ गला IMT 2000. It is the official ITU name for 3G to provide wireless access to global telecommunication. माने wirelessly हमें globally सब जिनस communicate करि परिबा. Evolution of 3G. 3G रे कोन आसिला गोटे आसिला GPRS General Packet Radio Service. GPRS रहिला, AIDS रहिला, Enhanced Data Rate for Global Evolution. Then रहिबो UMTS Universal Mobile Telecommunication System, HSDPA High Speed Download Link Packet रहिबो, LTE अल्ट्रा बा LTE आमे जे कहबा हमर जतले 4G आसिला से जरा VoLTE आसिला, वॉइस ओवर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन. It आसिबो LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एंड इवॉल्व यूनिवर्सल टेरिस्ट्रियल रेडियो एक्सेस. तो ये सब डिफरेंट 3G रा नेटवर्क एटी आसिला. आ भीतर कोन आसिबो तमे वेब ब्राउजिंग करी होतला माने नॉर्मल स्पीड टिके गोटे एउठु ही ऐप रो जनरेशन सब आरंभ होला जो डिफरेंट प्ले स्टोर रो एप्लीकेशन गुडा को जनरेट होला. ईमेल सर्विस, टीवी स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मैप नेविगेशन, डाउनलोडिंग MP3 सॉन्ग्स ये सब रहिला. फ्रीक्वेंट बैंड यूज इन 3G 800 to 900 megahertz, 1.7 to 1.9 gigahertz, 2.5 to 2.69 gigahertz. तो ये होची तारा रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी थ्रू रो हम डाटा ट्रांसफर हबो. तो हाउ द 3G works actually? 3G enable device such as mobile phone and mobile dongle. Mobile phone और mobile dongle एटा काम करिवो. Deliver the broadband speed internet. It work by parceling the data sent to the network into small packet. छोटो पैकेट रे डाटा ट्रांसफर हबो which are then assembled to the correct order. This is very difficult from the normal 2G. माने जेते बेले 3G रे हम डाटा गुडा का ट्रांसफर करिवा जेमति हम TCP IP रे पढितेले डाटा गुडा का कोन करिवो छोटो पैकेट रे कन्वर्ट करिवो आ सब पैकेट रे को रहिवो सेंडर एड्रेस आ रिसीवर एड्रेस रहिवो. ओके तो सेंडर एड्रेस रिसीवर एड्रेस रहिवो डाटा पैकेटिंग में बुझिला कि नै लेखा एटा 3G. तबरा से 4G जते बड़े जियो इंट्रोड्यूस हला तो से समय 4G नेटवर्क हम पाखु आसिला. आदरे इंटरनेट किछि समय पे हमें फ्री पाइले आ जेते सब आप रो माने इवोल्यूशन हला स्मार्टफोन रो जो इवोल्यूशन हला तो ए 4 जनरेशन नु ही आसिला. तो 4th generation is a mobile communication technology introduced in the 2010. It is integrated different wireless technologies such as GSM, GPRS, IMT 2000, Wi-Fi, Bluetooth to provide high speed, seamless and reliable communication. और जो communication break आउ हैला ने इंटरनेट द्वारा हमें वीडियो कॉलिंग करि परले, वॉइस कॉलिंग ए सब जिंस ए पीरियड भीतर आसेला. तो टेक्नोलॉजी यूज एठी आसला लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन WiMAX, वर्ल्ड वाइड इंटरप्रोबेबिलिटी एंड माइक्रोवेव एक्सेस. तो ये समय जो रोमिंग जो ऑप्शन था रोमिंग रे जो चार्जेस गुडा थिला ए चार्जेस गुडा का रहिलानी. तो वेरी हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड 1000 to 1 Gbps, high quality of QoS, okay, and better security, seamless roaming between different wireless network, support anytime anywhere communication. ताको कहा जाए मैजिक ऑफ 4G. मैजिक ऑफ 4G रे मोबाइल मल्टीमीडिया M फॉर मोबाइल मल्टीमीडिया, A फॉर एनी टाइम एनीवेयर सब जगह में यूज करि परिबा, G फॉर ग्लोबल मोबिलिटी सपोर्ट रोमिंग रहिला नाही, I फॉर इंटीग्रेटेड वायरलेस सॉल्यूशंस डिफरेंट नेटवर्क को से ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जिवो, C फॉर कस्टमाइज पर्सनल सर्विस.
तो एप्लिकेशन आर कौन रहिबो हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट ब्राउजिंग आईपी टेलीफोनिंग ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम हाई डेफिनेशन मोबाइल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 3D टीवी क्लाउड कंप्यूटिंग ये सब रहिला आ जतले 5G आसला से समय कहला टोटली अपन सेट टॉप बॉक्स ही पइला लाइव स्ट्रीमिंग स्मार्टफोन स्मार्ट टीवी तो ये सब जिनस आसला ए समय स्मार्ट मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस होला 5G बेले को सब डिवाइस गुड़ा कहीं स्मार्ट है ओके देखो 4G